the revision class. Okay, and if any of you have seen the video which was shared by our director madam, she has clearly defined what does this revision class means and why it is required and why we have initiated this for all of you. Okay, so considering considering the need that many of you could not reach to the counseling sessions, and then for many of you there could be several doubts regarding the course, regarding the different subjects. So for all the subjects we have as per madam's guidance, uh, we have decided to start this revision classes, revision sessions. So all of you, those who have not attended the classes, or those who are you are first time, for all of you, this is a session, or this is a chance where you can ask the doubts, the questions regarding the subject. And for all the papers we have scheduled the revision classes. One suggestion for you is that you try to join from your SOL email ID and credentials. So that time I don't have to make you. You will not go directly to the room or waiting room. Rather, you can directly join the class. So that is the reason why many of you could not join today. So Good let us morning, sir. begin with. Good morning. Sir, we So don't have let's. a SOIL ID and password also. Microsoft ID we don't have it. No, so the ID which starts from your roll number and at the rate soul-du.ac.in, that should be your ID and credential. Okay, And what so about if the you, password? Sir, we can't hear your voice. There's a lot of echo in it. yeah, so can you hear me? Sir, it's Am clear. I audible Yes, now? sir, we can clearly. Yes, Clearly, sir, sir. you are Okay, audible. so Yes, sir. okay, fine. Sir, it is So looking like more like robotics. mm, Maybe you can try to leave and rejoin. so all of you, please mute yourself. Okay, and then now I am starting this session, and after the session there will be window for 15-20 minutes, and that time you can ask the questions or any clarifications whatever you are having. Okay. So the paper whose revision we are going to conduct today is information storage and retrieval. That is paper M108, and we are regularly conducting the classes of this paper at as well at Sahid Rajguru College. Many of you who used to come to the sessions, to the counseling sessions, they must be aware about that. And in today's session, we will be discussing. So overall, let me just share my screen so that and give a brief overview once again about our once again about our entire course, and then we will move to the point of discussion. So I'm sure your my screen would be visible to you all. So there are 4 units in this particular paper. Can you see the screen? Yes, sir, it is visible. Okay, good. So as I told that this is paper M108, which is information storage and retrieval system. It has 4 units. Unit 1 consists of the fundamental concepts of information retrievals, which includes the concepts, characteristics of information retrieval, objectives, types, operations and design, compatibility of information storage and retrieval system.
And then information retrieval process, search strategy, evaluation of information storage and retrieval system, and vocabulary control tools like classification schedule, subject heading list, thesaurus, its need and structure, and construction of thesaurus, principles and evolution of bibliographic description. Then unit 2 includes knowledge management, basically information retrieval in the knowledge management systems, where we have already discussed about the index and different indexing systems, including the pre-coordinate and post-coordinate indexing systems and indexing languages. Then the third unit was about bibliographic description. A bit of the bibliographic description you must have already studied in your bachelor's, believe ISC, where ISBT and other areas you must be knowing about. And then metadata standard, that is Dublin Core, Mark 21, and other metadata standards comes under this particular part. And the last one is search techniques and information retrievals, which is man-to-machine retrieval system, search strategies, uh, different operations like Boolean operation, proximity search, heuristic search, different navigational search, internet searching, and meta search engines. And in the end, which we are going to cover in the physical class, which still is not being covered, and that's course curriculum for the last day's session, that is data mining, data harvesting, semantic web technologies, and the remaining some of the other parts. So let's move to the um, let's come back to the to our class, what all we are going to cover today. So today we are going to cover at least unit 1 completely, because that is the largest unit. If you go to your SLM, there you can find it has more chapter than any other unit. Okay, and we will also discuss about the internal assessment a bit, what all are the different kind of questions it is asked in internal assessment, and then we will also discuss about the main exams, what kind of questions are quite prevalent in this particular paper. Now now let me go let me once again share my screen to you all, so that I can show the uh, so SLM, and from SLM itself I am going to give you the overview. So I guess now the SLM should be visible. Can you see my screen now, where I have opened the web version of your SLM? Can you see it? See my screen? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So more students have joined. So the students, those are joining now, I think now I won't accept them. So please join once and do not go back and forth. So this is the index for unit 1, where the fundamental concepts are discussed, including the different functions of information retrieval systems, information retrieval process, domain analysis of information retrieval system, and basic concepts of information access and retrieval. Then what are the different objectives of information storage and retrieval, and characteristics of information storage and retrieval and its system, then methods of storing and retrieving the information, and different types of information retrieval, access and retrieval. So here basically the different based on different data types, the information storage and retrieval systems are defined.
Then various information retrieval models are discussed also in this particular lesson, and then design of information access and retrieval system. Then in today's class itself, we will also put a little focus on the compatibility issues and what are the different challenges we face when it comes to the compatibility of information storage and retrieval systems. Then we will be discussing about some of the search strategies like keyword search, subject search, phrase search, and different other searches like Boolean, and then other methods like truncation. All these things are already covered in the class, but I'll just give a brief overview or brief idea about that in today's class, because as you know that this is merely a revision class. Then the last session which we are going to cover, last lesson which we are going to cover is the evaluation, and in evaluation we will cover about the recall and precision methods, and finally some of the uh, control vocabulary tools like thesaurus and all in today's class. And maybe if time doesn't permit, we can discuss in the next class, because we have another revision session. I guess it is on 7th or 8th, so that time we will discuss whatever is remaining afterwards. So coming back to the first part, that is the topic itself, that's information storage and retrieval. So information, data, information, knowledge and wisdom, it's DIKW model you must be aware of. And it's a like I would like to explain with example. Like suppose you want to commute from one place to other place, uh, uh, like suppose you want to visit from SOL to Said Raj Guru College. So there are you have many options to go, और मान लीजिएगा आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो आप बस से जा सकते हो, आपके पास खुद का दूसरा ट्रैवल मैकेनिज्म हो सकता है, आप जा सकते हो किसी ऑटो से जा सकते हो या मेट्रो से जा सकते हो, या बहुत सारे मैकेनिज्म है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बस का, मान तो देयर आर डिफरेंट बस नंबर्स व्हिच माइट बी गोइंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो ये जो नंबर्स हैं ये एक तरह से डेटा हो गया आपके लिए, डिफरेंट बस नंबर्स। और ये बस नंबर्स एसओएल से शहीद राजगुरु कॉलेज तक जाता है। आपने एक कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश कर लिया कि वन प्लेस टू अदर प्लेस व्हेन यू आर कम्यूटिंग, ये इस डेटा को एक कॉन्टेक्स्ट जब आपने दे दिया तो ये एक तरह से इंफॉर्मेशन बन गया आपके लिए। सो दिस इज like suppose you want to go to from Saeed Rajguru, from SOL to Saeed Rajguru, there are bus numbers like 911, 912 or 950. So you have these three bus numbers. So independently these three bus numbers are nothing but merely data. But when you know that 912 goes to Shahid Rajguru College, this becomes information for you. And suppose if you give further context to this, out of 911, 912 and 913, 912 is the better option for you. So it takes lesser time, or maybe this bus tickets are cheaper. तो ये सारा इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को जब थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट आपने दे दिया तो ये बन जाता है नॉलेज। ओके, तो अब हम जब जान लेते हैं कि इंफॉर्मेशन के बारे में जानने के बाद फिर अगला स्टेज जो इस पेपर में आता है वो है इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल। तो स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज आप सभी जानते हैं कि देयर आर डिफरेंट, हर एक चीज को जो in terms of information only we will be talking, and in digital environment, you know, there are different storage units and different storage storage means. So वो क्या है, जैसे आप अपने नॉर्मल लाइफ में कहाँ पे स्टोर करते हो अपने डेटा को? आप अपने सिस्टम में अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करते हो,
आप आपके पास पेन ड्राइव होता है, वहाँ स्टोर करते हो, हार्ड डिस्क होता है, वहाँ स्टोर करते हो, पर लार्जर स्केल पे डेटाबेसेस में स्टोर किए जाते हैं। और अगर और देखा जाए तो डिफरेंट तरीके के डेटा को स्टोर करने के लिए डिफरेंट तरीके के यूनिट्स भी होते हैं। जैसे अगर आपको एक्सेल शीट में अगर आपको कोई टैबुलर डेटा को स्टोर करना है तो आप एक्सेल फॉर्मेट फॉलो करते हो, और या फिर CSV या TSV फॉर्मेट फॉलो करते हो। या अगर आपको दूसरे दूसरे फाइल फॉर्मेट जैसे टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट में आपको स्टोर करना है तो आप जाते हो .txt, या फिर आप दूसरे फाइल फॉर्मेट्स को यूज़ करते हो जैसे डॉक्स फाइल या डॉक फाइल, या अगर ओपन फाइल फॉर्मेट की बात करें तो .odt फाइल्स में आप स्टोर कर लेते हो। उसी तरीके से अगर आपको डोमेन स्पेसिफिक डेटा को स्टोर करना है तो उसके यूनिट्स अलग अलग हैं। तो सो दिस इज अ वेरी जेनरिक मीनिंग ऑफ स्टोरेज। और अगला जो स्टेज है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो है रिट्रीवल। रिट्रीवल का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है ऑब्टेन करना, कहीं से कोई भी चीज प्राप्त करना या ऑब्टेन करना। तो अगर हम डिफाइन करें इंफॉर्मेशन रिट्रीवल को, तो दैट इज लाइक प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ सोर्सेज टिपिकली थ्रू सिस्टमेटिक प्रोसेस। तो इसमें जो मेजर कंपोनेंट्स हुए वो हुए कि एक तो ये एक प्रोसेस है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। दूसरा है कि इसमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए। तो जब आप रिट्रीवल की बात करते हैं तो शुड गिव यू अ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। और कहाँ से, देयर शुड बी सम लोकेशन फ्रॉम वेयर यू हैव टू रिट्रीव। तो वो है एक कोई डेटाबेस होगा, या फिर कोई इवन लाइब्रेरी से भी रिट्रीवल होता है। जब आप ये कैटलॉग कार्ड से जाके सर्च करके रिसोर्सेज को रिट्रीव करते हो, निकालते हो, तो दैट इज आल्सो काइंड ऑफ फिजिकल लाइब्रेरी के सिस्टम में वो एक फिजिकल लाइब्रेरी के सिस्टम में रिट्रीवल हो गया। या इंडेक्स से देख के, बैक ऑफ द बुक इंडेक्स का एग्जांपल मैं लेता हूँ, आई क्वाइट ऑफन टेक दैट एग्जांपल इन द क्लासरूम आल्सो, कि आप जब आपको देयर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इन अ बुक, और उन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए या उन कॉन्सेप्ट्स को उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानने के लिए आप जब डिटेल जानना चाहते हैं तो यू गो टू द बैक ऑफ द बुक इंडेक्स। और वहाँ क्या होता है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स दिए होते हैं और उसका लोकेशन दिया होता है। तो उस कॉन्सेप्ट को उस लोकेशन से मैप करके आपको पेज नंबर मिल जाता है, और उस पेज नंबर पे जाके आप उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को रिट्रीव कर लेते हो। तो ये एक ये फिजिकल सिस्टम में जो फिजिकल लाइब्रेरी सिस्टम में इस तरह से इंडेक्सेस बहुत सारे बनाए गए हैं, जैसे कि डिफरेंट प्री कोऑर्डिनेट और पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सेस बनाए गए हैं रिसोर्सेज को रिट्रीव करने के लिए या रिसोर्सेज के कॉन्सेप्ट्स को रिट्रीव करने के लिए। तो आई वाज डिफाइनिंग द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। तो मैं कौन से मेजर पॉइंट्स बोला, वो कि पहली बात कि ये एक प्रोसेस है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। देन in this process you have to retrieve the relevant information and from certain collection of source। और मैंने collection of source का एग्जांपल बताया। डिफरेंट बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस हो सकते हैं, जैसे आप वेब ऑफ साइंस से सर्च करते हो, कई बार स्कोपस या ऐसे बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस से भी सर्च करते हो। तो ये सारे सोर्सेज हो गए, यहाँ से डेटा आपने यहाँ से इंफॉर्मेशन आपने रिट्रीव करा है। और एक और जो इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन इसमें है वो है सिस्टमेटिक अप्रोच। तो जब आप रिट्रीव कर रहे हो तो इट शुड नॉट बी रैंडम, इट शुड बी सिस्टमेटिक। कोई खास तरीका आपको फॉलो करना है ताकि बेहतर या ऑप्टिमम रिजल्ट आप रिट्रीव कर सको। तो अब इसमें इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है, और ये आपके एसएलएम में अवेलेबल भी है, तो आप वहां से देख सकते हो। तो कंपोनेंट सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई रिसोर्स रिट्रीव करने की जरूरत आई, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, आप क्वेरी फॉर्मुलेट करते हो, है ना। जैसे आपने एक एग्जांपल ले लो, आप सर्च इंजन का एग्जांपल ले लो, आप गूगल का एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो गूगल से अगर आपको कोई चीज रिट्रीव करनी होती है तो आप क्या करते हो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिट्रीव क्या करना है,
और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, आप क्वेरी फॉर्मुलेट करते हो सबसे पहले, कि वो कीवर्ड बेस्ड क्वेरी हो सकती है, फिर कुछ एडवांस टेक्निक्स का आप यूज कर सकते हो, बट इट विल हैव सम क्वेरी। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया और वो उस क्वेरी को उस क्वेरी को फिर आप क्या करते हो, आप उस क्वेरी को टाइप करते हो उसके ब्राउजर में, किसी खास ब्राउजर में, और गूगल एज ए सर्च इंजन उसको सर्च करता है और आपको रिट्रीवल रिजल्ट। सो द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम इज फॉर्मुलेशन ऑफ द क्वेरी। देन इंडेक्सिंग जो होता है फिजिकल और डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही सिस्टम में इंडेक्सिंग परफॉर्म की जाती है। और जो सर्च इंजन्स की जो इंडेक्सिंग होती है, इसके बारे में हमने डिटेल में बात कर रखा है क्लासरूम्स में। सर्च इंजन की इंडेक्सिंग के डिफरेंट तरीके हैं जो ऑलरेडी आपके एसएलएम में भी मेंशन है, और वी विल डिस्कस में भी when I am discussing about the search engines. लेकिन along with search engines we are also going to discuss about the physical library system में indexing कैसे होता है। तो physical library system में mostly हम लोग दो तरह के indexes बनाते हैं, एक होता है derived और दूसरा होता है assigned indexes। derived indexes जो होते हैं उसका एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्लासेस में बताया था, कीवर्ड इंडेक्सिंग जैसे कि क्विक इंडेक्सिंग, कीट अल्फा, या फिर KWWC indexing करके keyword, these are mostly keyword based indexing. And another kind of index which we have discussed in the classrooms are that is citation indexes. So ये दोनों derived indexes होते हैं। derived indexes mostly क्या होते हैं, उनको पूरे के पूरे कीवर्ड से पूरा का पूरा कीवर्ड आप derive करते हो सोर्स, पूरे सोर्स से। जैसे साइटेशन इंडेक्स, तो पूरा का पूरा साइटेशन, कंप्लीट साइटेशन विल बी स्टोर्ड इन सच अ वे कि साइटेशन के जितने इंफॉर्मेशन है वो बाद में आप रिट्रीव कर सको। अगला है असाइंड। तो असाइंड इंडेक्सिंग के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक है प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग एंड दूसरा है पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग। तो प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्स में हम मोस्टली डिस्कस करते हैं मोस्टली जब बनाने लगते हैं प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, तो उस टाइम पे वी यूज आवर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, और एक खास इंडेक्सिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं एंड मैप बोथ द कॉन्सेप्ट्स इंडेक्सिंग लैंग्वेज एंड ट्राई टू बिल्ड द सिमेंटिक्स। और ये तीनों मिलके एक प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग तैयार करते हैं। तो प्री कोऑर्डिनेट और पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग स्टार्ट किया जाता है, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग में जो है वो एंटिसिपेटरी होता है। उसमें आप पहले से ही एक्सपेक्ट करते हो कि दिस इज हाउ यूजर विल कम टू एक्सेस द रिसोर्सेज, और उसके अकॉर्डिंग ही आप डिफरेंट इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस का यूज करके आप इंडेक्स तैयार करते हो। पोस्ट कोऑर्डिनेट में ये नहीं होता है। पोस्ट कोऑर्डिनेट में जो इंडेक्सिंग होती है वो दैट हैपेंस एट द टाइम आप सर्च। जैसे आजकल के जो कंप्यूटराइज्ड इंडेक्स, कंप्यूटर बेस्ड इंडेक्सेस है, जो जैसे सर्च इंजन में जो आप सर्च करते हो, वो आप क्वेरी सर्च करते हो और वो क्वेरीज इंडेक्स, वो क्वेरीज देयर आर डिफरेंट स्पाइडर्स, वो स्पाइडर्स जाते हैं वर्ल्ड वाइड वेब में और उस क्वेरी के अकॉर्डिंग डिफरेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को सर्च करते हैं, उनको इंडेक्स करते हैं वो, और वो स्निपेट की तरह जो आपके गूगल पे आप देखते होंगे जब आप कोई कीवर्ड सर्च करते हो, तो स्निपेट के तौर पे वो प्रेजेंट करते हैं आपके स्क्रीन पे, एंड देन इफ यू क्लिक दैट यू गेट द फाइनल रिजल्ट। तो कमिंग बैक टू द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल कंपोनेंट, तो एक दूसरा कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट मैंने बात किया था वो था क्वेरी, और दूसरा कंपोनेंट हमने बात किया था इंडेक्सिंग। अगला है आपको ये देखना है कि रेलेवेंस रैंकिंग। रेलेवेंस रैंकिंग होता है कि अगर आपने कोई क्वेरी के बेसिस पे कुछ सर्च करा, तो कोई भी रिजल्ट पहले आएगा या बाद में आएगा, गूगल पर ही देख लो आप, एक बार आप
सर्च करते हो तो एक बार में कुछ 10 लाख पेज आपके सामने आ जाते हैं, और जिसमें से आपको कुछ 2-4 पेज ही आप देखते हो, या मैक्सिमम 5 से 7 पेज आप क्लिक करते हो और इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हो. पर देयर आर 10 lakh other papers or other resources which has been obtained by the search engine. अब वो कैसे करता है उनको, कोई किसी को पहले रखता है, किसी को बाद में रखता है. इसको करने का उसका एल्गोरिदम होता है, जिसको और वो रेलेवेंस के बेस, उसका रेलेवेंस आइडेंटिफाई करता है कि किस रिसोर्स का रेलेवेंस कितना ज़्यादा है. ठीक है, और वही रेलेवेंस जो होती है वो आई मीन दैट इज बेस्ड ऑन रेलेवेंस रैंकिंग. गूगल पेज रैंक एल्गोरिदम है. There are different algorithm like TF IDF matrix or term frequency and inverse document frequency रैंकिंग करने का ये भी एक मेथड है. इसके अलावा there are different सर्च इंजन्स, सर्च एल्गोरिदम्स जिनको फॉलो किया जाता है, और सर्च डिफरेंट सर्च टेक्निक्स जब हम यूज करते हैं, जैसे हमने बूलियन या दूसरे कोई भी सर्च टेक्निक्स, प्रॉक्सिमिटी सर्च या फिर other such like wild card or other methods when we are using, तो वो किस तरह से बैकएंड में काम करता है उसकी भी जरूरत होती है. So these are some of the components of information retrieval. So these components are already discussed in your SLM, so there you can go through. इसके अलावा इंडेक्सिंग की अगली बात करते हैं अबाउट just real world example of information retrieval systems. तो मैंने क्लास में भी बताया था, there are आप सर्च इंजन्स को एक एग्जांपल ले सकते हो, क्लासिकल और यू कैन से मेजर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम. एज ए मेजर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम सर्च इंजन है. आपका कैटलॉग और ओपैक जो होता है वो भी एक तरह का इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम है, और बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस ये भी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के सिस्टम्स हैं. तो अब आपको अगर इनके बारे में अच्छे से पता है, जैसे आपने ऑलरेडी ऑल ऑफ यू हैव यूज्ड डिफरेंट सर्च इंजन्स, गूगल या बिंग, ये सारे. तो इनमें से जब भी आप सर्च करते हो, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको अगर आप समझते हो तो आप आसानी से एटलीस्ट इफ यू डोंट नो कंप्लीटली यू कैन गेस अबाउट सो मेनी थिंग्स. तो जो कंपोनेंट्स हैं सर्च इंजन्स के, ठीक है, वो वही कंपोनेंट किसी भी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम के होंगे. कैटलॉग और ओपैक के जो कंपोनेंट्स हैं, वही कंपोनेंट्स किसी भी इन जनरल किसी भी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम के होंगे. और बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस जैसे स्कोपस या वेब ऑफ साइंस की जो फंक्शनिंग है, सेम वे अदर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स आल्सो वर्क. तो whenever it is asked from any of the such questions, you can think of these examples, and since you are used to or you are aware about these these information retrieval systems like search engines, catalogs, opacs or bibliographic databases, तो क्या होगा कि आप एक तरह से रिलेट कर पाओगे व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर्स. ठीक है, तो इनको एज अ बेंचमार्क रख के आपको आंसर्स लिखने चाहिए जब आप एग्जाम में लिख रहे हो. ठीक है, आगे कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज काइंड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल. तो सबसे पहला तो अपने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में लाइब्रेरी कैटलॉग्स आए और इंडेक्सेस आए, बहुत पहले से हैं वो. If you go to the history of indexing systems or indexes, the first kind of index was given by C.A. Cutter in around I think around 1900. Then systematic indexing came, which was given by Kasser. I think it was in 1911. And then other methods like Ranganathan's chain indexing in 1934. Then other indexing systems like keyword indexes, those came after 1950s. Then citation indexes, those came in 1960s. Then other computerized based indexes. Meanwhile, in between, in library information science, you must have heard about the punch cards. They also comes under
the means of information retrieval or kind of information retrieval tools. Those came in 1950s. Then different search algorithms, they came in 1960s. That during 1960s, the first generation of computer itself came after 1950s. So all the related or computer related concepts or computerized information retrieval system, of course, will come after 1950s, 1960s, and 1780s. It got boost. And search, first kind of search algorithm, as I told, came in 1960s. Then Boolean retrieval model was introduced in 1970s. Then different databases were expanded in 1980s. Then internet search engines came after 1990s. Then Google, it started, I mean, page rank algorithm itself came in 2000. Then different semantic search, machine learning and NLP based searches, AI and NLP based searches. All these came in 2005. And now the search and query behavior has changed significantly. And after this era of chat GPT, a lot of things have already changed. And the search and query behavior is now something else what it was a few years before, 2 3 years before. So now people search not based on just the query. They don't go to search engine immediately. Most of the time nowadays, users, they are going to these generative AI powered different tools like Copilot or ChatGPT or other systems. So accordingly, the information retrieval retrieval systems upgraded itself. Information retrieval algorithms also got upgraded. Then accordingly, users are also upgrading themselves for as per their needs. Now, another question which quite often asked in the exams, that is define the information retrieval system. Okay, so I have already discussed about information retrieval. So information retrieval system, if we define, we have to add a bit more in information retrieval system. So information retrieval. So it is a framework. Information retrieval system is a framework or software application which is designed to systematically organize, store, and retrieve information from a database. So there are a few components which you should focus on. So first of all, it is a framework or software application, and the purpose of this is to systematically organize, store, and retrieve the information. And from where? From certain databases. Okay. Databases means, when I say databases, you should understand it as not only to any particular database like MySQL or PostgreSQL or any certain specific database, but also it includes other storage mediums like repositories, or maybe other kind of indexes like bibliographic databases, or indexes like citation indexes. So it can happen. It can get the uh, information from a storage unit. That is one, and the purpose is from for the purpose of organization, storage, and retrieval of information. And how it works, first of all, you have to put the query, and the query will be indexed, and that index will generate certain result. And from where it will get the data? It will get the data from some storage, that is either database or any repository. So so as I already discussed, the components, those are query processing, that is the first thing. The second thing is indexing, when you map the terms into the document collection. And the third thing is document collection, where the a variety of documents will be available in the databases. From there, you collect the document. Then there are different rules to search. Those are search algorithms.
And then relevance ranking I talked about, that is process of ordering that which document should be appeared first और कौन सा डॉक्यूमेंट बाद में आएगा. और कुछ रिट्रीवल मॉडल्स जैसे मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल, वेक्टर स्पेस और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स, उनको यूज करके ऑप्टिमाइज किया जाता है इंफॉर्मेशन सर्च और रिट्रीवल प्रोसेस को. ठीक है. इसके अलावा कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं जैसे यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस बहुत जरूरी है, अदरवाइज वेयर विल यू give the query, where will you search for the query, and the feedback mechanism. एक another important thing is feedback mechanism, जो कि कई बार users की तरफ से आता है और कई बार system, if it is syntactic or one way, then the feedback is taken from different means like mail and other media. So that is another component of information retrieval system. So as of now, what we have discussed, we have just discussed about the information. What is information? Then define the information retrieval, define the information retrieval system, discussed about the different information retrieval components. Now let us discuss about the need of information retrieval system. Why we want an additional information retrieval system? So first of all, I am sure that you must be aware about the volume of data or information is being generated across the domain. आप सोचें कि आपकी सारी एक्टिविटीज से कुछ ना कुछ डेटा या इंफॉर्मेशन यू आर जनरेटिंग. ठीक है. आप दूसरा देख लो, बहुत सारा डेटा या इंफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है रिसर्च से, बहुत सारा डेटा या इंफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है, आपके गवर्नमेंट डेटा सेट्स हैं, आपकी एक्टिविटीज से बहुत सारे डेटा सेट्स एक्वायर किए जाते हैं, जैसे ट्रैफिक का जो डेटा हो गया या सीसीटीवी कैमरे के जो डेटा हो गए. तो ये सारे के सारे डेटा या इंफॉर्मेशन ये इतना ज़्यादा है, इतना ह्यूज है कि इट इज़ रिक्वायर्ड कि इसको थोड़ा सा डोमेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स तैयार किए जाएं और बेहतर तरीके से इसको लोगों तक पहुंचाया जाए. आप you must be aware about various data, data units, at least in electronic format. आपको पता होगा there are bits, bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes, exabytes, zettabyte, yottabyte, and even more. So nowadays each and every domain is generating a lot of data, so that is one of the reason why it is needed to have the information retrieval system, ताकि बेहतर retrieval प्राप्त हो सके. Access to different content is another need or another reason why we require to have the information retrieval system. आपको you must be knowing that there are different types of data information contents, like in the form of text, in the form of images, in the form of audio, in the form of video, animations, monomedia, multimedia, hypertext, hypermedia, then user generated text. तो ये सारे के सारे different data types जो हैं, इनको अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम नहीं तैयार किया गया तो इट विल बी डिफिकल्ट टू एक्वायर द इंफॉर्मेशन. ये एक जगह पे पड़े रहेंगे एंड इट विल बी जस्ट लाइक हीप ऑफ गार्बेज, नथिंग मोर देन दैट. तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेक सच सिस्टम और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम जिससे कि बेहतर तरीके का रिट्रीवल प्राप्त हो सके, पर्टिकुलरली इन द इंटरनेट एरा और इन द एरा वेयर एवरीवन, all of us are data producer or data generator and data consumer both. Now another reason why we need to have the information retrieval system. So as I told that the components of information retrieval systems include the query, the document collection, and indexing. So since the indexes are made, since the relevancy rankings are prepared, क्या होता है कि you get the quick and precise retrieval in information retrieval systems. ठीक है. तो that is another need. Then librarians do not have
so much time that they can go and I mean you can go to each and every library and each and every individual go to library and ask the queries. Then of course they also have limited time and it is not practically possible to you know give the response to each and everyone's queries. ओके तो उसके लिए क्या करते हैं, एक अगर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम तैयार किया तो इंस्टेड ऑफ directly going to the librarian or directly going to the such service facilitators, you can search it through the mean or through the information retrieval system itself. तो आपको बहुत ज़्यादा dependent नहीं होना पड़ेगा on to them. That is another need why information retrieval system is required. Then there are different discipline specific needs. हर एक डोमेन का अलग अलग नेचर होता है, उनके इंफॉर्मेशन उनके डेटा अलग होते हैं. केमिस्ट्री का डेटा और इंफॉर्मेशन अलग होता है सोशल साइंस के डेटा से. उनके लिए डेटा या इंफॉर्मेशन केमिकल्स के इंफॉर्मेशन हुए. हम सोशल साइंस में वो डेटा या इंफॉर्मेशन मोस्टली टैबुलर डेटा होता है जो रेस्पॉन्सेज और इससे रिलेटेड होता है. तो अब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम जब तैयार किए जाएंगे तो डिफरेंट डोमेन के लिए डिफरेंट तरीके के इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स तैयार किए जाएंगे. दैट इज अनदर नीड. देन तो ये हो गए कुछ कारण और कुछ नीड्स वाई इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम इज मैंडेटरी और रिक्वायर्ड टू टू बी डेवलप्ड. नाउ जब हम बात करेंगे फीचर्स या कंपोनेंट्स की तो once again I would say that the features are related to the components only. So each and every information retrieval system will help you to formulate the query, or they will have graphical user interface from where you can formulate the query, and the index will take place within the system, and then the different kind of algorithms, search algorithms, then retrieval models will be used to perform the effective search. Then the next one is feedback mechanism, which I already discussed. Another question which is quite often asked related to information retrieval system is what are the different types of information retrieval system. So information retrieval systems के type ना वो होते हैं इंफॉर्मेशन के डिफरेंट टाइप्स जो होंगे वही इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स के भी टाइप्स होते हैं. जैसे मान लीजिए आपने आप डील कर रहे हो खाली टेक्स्ट में, तो आपका जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम होगा वो टेक्स्ट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम बनेगा. अगर आप इमेजेस में डील कर रहे हो तो वो इमेज रिट्रीवल सिस्टम होगा, या मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन अगर डील कर रहे हो तो दैट इज मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम. If it is speech or music or related information you are trying to retrieve, or the system is related to that particular kind of information, then it becomes audio information retrieval system. Then there are database management systems where there are DBMS like MySQL or PostgreSQL, MariaDB, all those database, those are database management systems. Then for different so now scope, coming back to the another important concept, that scope of any information retrieval system. So scope is again defined based on three major categories. That is structured information retrieval systems, semi-structured, and then unstructured. So structured information retrieval system में क्या होगा, सारा का सारा जो डेटा या इंफॉर्मेशन होगा वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा. स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं. आपने SQL डेटाबेस देखा होगा जिसमें कि आपके डी स्पेस या फिर कोहा में भी इवन जो बैक एंड में जो डेटाबेसेस काम करते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं. दैट इज वन एग्जांपल. अनदर एग्जांपल कुड बी जो सिंपल एक्सेल शीट्स.
That is also example of structured data or structured information. Then CSV files, it's comma separated values files also are the example of structured. The second one is semi-structured, so HTML, XML, or JSON files, where based on these data types, the information can be said to be as a semi-structured information retrieval system. And then there are information retrieval systems which allow you to, you know, get the full text search, like the Word or social media pages or the different full text databases. So these are the example of unstructured information retrieval system. तो स्कोप जो हुआ इसका, वो स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में. तो इसका जो दिस इज द फेरी अंडर विच the entire information, the landscape of entire information retrieval system lies. और जो टाइप्स मैंने बताए थे वो टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन डेटा टाइप्स और इंफॉर्मेशन टाइप्स जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम यूज करता है, जैसे स्पीच, टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक, क्वेश्चन आंसर के सिस्टम्स हो गए, रेफरेंस सिस्टम्स हो गए. तो ये सारे इसके टाइप्स हो गए. अब जो 2 मेजर फंक्शन होता है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम का है, वो है एक करंट अवेयरनेस सर्विस, जो कि लाइब्रेरीज मोस्टली प्रोवाइड करवाती है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स हैं तो they will be used for providing the current awareness service to the users. Then retrospective search, आप बाद में जाके क्वेरी फॉर्मुलेट करते हो, बैकएंड में डेटा डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स से इधर डॉक्यूमेंट या उससे इंफॉर्मेशन को रिट्रीव किया जाता है एंड इट इज प्रेजेंटेड टू यू. अब आगे आके discuss if we talk about another component which is evaluation of information retrieval system. तो हम जो evaluate करते हैं वो different parameters की basis पे होता है, जिसको हम parametric evaluation बोलते हैं. तो उन parameters में जो सबसे कॉमनली यूज किया जाने वाला इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम को इवैल्यूएशन का जो सबसे कॉमनली यूज किया जाने वाला इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो मेथड है वो है रिकॉल एंड प्रिसीजन. ठीक है, रिकॉल और प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि रिकॉल का मतलब होता है कि अगर हाई रिकॉल है मतलब उसमें नॉइज भी होगा. ठीक है, नॉइज भी होगा इन द सेंस कि मान लो आपने कोई इंफॉर्मेशन सर्च करी, मान लो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल आपने सर्च करी, ये क्वेरी आपने सर्च करी, तो जिस सिस्टम का रिकॉल हाई होगा उस सिस्टम में इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के तो आंसर आएंगे, ऑप्शंस आएंगे, कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगी जो कि इंफॉर्मेशन और रिट्रीवल से एडिशनल हैं, जिनको कि हम नॉइज बोलते हैं. लेकिन ऐसे सिनेरियो में, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि अगर हाई रिकॉल वाला सिस्टम है तो if you are a beginner or newbie in any domain, तो it is advised that you go for high recall system, जिसमें कि आपको पता चल सके कि आपको एक मोर ओवरव्यू आपको पता चल सकेगा जब किसी भी सिस्टम का रिकॉल हाई होगा. और दूसरा है प्रिसीजन. प्रिसीजन वो होता है जिसमें कि नॉइस वो एलिमेंट कम होता है, मतलब जितना कम से कम ऐसा इंफॉर्मेशन जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है या ऐसा इंफॉर्मेशन जो आपने स्पेसिफाई नहीं करा है वो न रिट्रीव हो, तो ऐसा सिस्टम को बोलते हैं हाई प्रिसीजन सिस्टम. ठीक है, द रिजल्ट्स विल बी प्रिसाइज इन प्रिसीजन सिस्टम एंड रिजल्ट्स विल बी imprecise or the results will be little more. That system will be called as recall, high recall system. एक और मेजर होता है एफ वैल्यू. एफ वैल्यू क्या करता है, उसमें रिकॉल और प्रिसीजन का हार्मोनिक मीन निकाला जाता है और उससे एक तरह से एवरेज निकाला जाता है रिकॉल और प्रिसीजन का. तो that is also used for the evaluation of information retrieval system. इसके अलावा किसी भी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम को इवेल्युएट करा जाता है बेस्ड ऑन द एक्यूरेसी, कि कितना एक्यूरेट रिजल्ट आपकी क्वेरी के बेसिस पे
वो प्रदान कर रहे हैं. Then efficiency, so how much how less you have to pay or how economic your system is when it comes to the search and retrieval. User satisfaction is another parameter based on which the evaluation is performed. How how satisfied people are. So for that the feedback is taken from the users. Then relevance ranking. So relevance ranking means whether the results are coming immediately to you or how 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 the rank is being prepared. So if something which is very important and it is coming on the 10th page, then it doesn't make sense because you may not go to the 10th page even. तो उस केस में क्या होगा, ये बेहतर है कि एक प्रॉपर रेलेवेंस रैंकिंग का यूज करा जाए और जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो पहले आपको प्रोजेक्ट करी जाए, दिखाई जाए. So this is another parameter based on which information retrieval system is evaluated. Then query processing time, कितना समय लग रहा है क्वेरी को प्रोसेस करने में. ऐसा ना हो कि आप कोई क्वेरी सर्च करें और लंबे समय तक आपको वेट करना पड़े. Then the coverage, how large I mean कितने सारे databases का access है particular information search और retrieval information retrieval system का. Then उसका GUI कितना इंटरैक्टिव है, लोग कितना interactiveness is directly proportional to the users time spent on particular system. जितना अच्छा उसका GUI होगा उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, otherwise it will be boring for after some times. Then error management, अगर कुछ error होता है तो उसका management कैसे किया जा रहा है, whether the information retrieval system is multilingual support is there or not. Then security issues, whether your data or will be privately managed or it will be shared to the others. Then how cost effective it is, whether the NLP is integrated with the information retrieval system. So ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं या कुछ पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे इवैल्यूएशन करा जाता है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम का. तो next one is I have already discussed about the recall and precision, the formula and all. I'm not going to talk in this. You can go to your SLM and discuss, and if you have any doubt you can discuss with me. You can ask how to calculate and all that. Sometimes so as of now whatever I have discussed from that, we have already we have seen the question paper, and questions are asked like what are the define information retrieval or define the information retrieval systems, what are the different components of information retrieval systems, what is the need of an information retrieval system, what are the different features of information retrieval systems, discuss the functioning of information retrieval system. Then they may ask that how to evaluate an information retrieval system. So whatever parameters I told, those are those parameters are used for evaluation of information retrieval system. Then quite a few times I have seen that they have asked a short note on recall and precision. So as I told that everything is this recall and precision is um, evaluation method for any information retrieval system. It can be an index or search engine or any bibliographic database search. So once again, I just would like to discuss a bit about recall and precision because this has come in the question paper. So here जब आप कोई भी चीज सर्च करते हो तो या तो आपको सही रिजल्ट मिलता है या आपको रिजल्ट नहीं मिलता है या फिर आपको कुछ रिजल्ट्स तो मिलता है लेकिन वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं होता है. ठीक है, तो दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक है रिलेवेंस और दूसरा है रिट्रीवल. तो समथिंग विच इज रेलिवेंट एंड रिट्रीवल, दैट इज व्हाट यू वांट. कि कोई भी
क्वेरी आपने दिया तो आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए और वो रिट्रीव होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि इनका जो सिस्टम है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम की जो फंक्शनिंग है वो इस तरीके की है कि ऑलवेज यू मे नॉट गेट द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीव। तो क्या होगा कि कई बार आपके कई रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिस हो जाएंगे जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम नहीं दे पाएगा आपको, और कई बार क्या होगा, नॉट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा जिसको हम बोलते हैं नॉइस। तो अब जब आप रिकॉल कैलकुलेट करते हो तो उस समय आपको कितने हिट्स मिले हैं या कितने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिले हैं और कितने कितने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के साथ साथ कितना ज़्यादा नॉइस मिला है। तो जितना ज़्यादा नॉइस आपको मिलेगा, जितना ज़्यादा नॉइस होगा उतना ज़्यादा नॉइस का नंबर वो प्रोपोर्शनल है रिकॉल रेशियो से, और जो मिसेज से कि कितने इंफॉर्मेशन मिस हुए। इसमें आप ये चाहते हो कि रिकॉल, जब हाई रिकॉल की बात करते हैं तो आप ये चाहते हो कि कम से कम इंफॉर्मेशन मिस हो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इंफॉर्मेशन नॉइसी हो या नॉट रिलेवेंट हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो रिलेवेंट हो और मिस हो जाए। तो फिल्टर जो होगा वो कम लगाया जाएगा जब आप रिकॉल की बात करते हैं। जब प्रिसीजन की बात करते हो तो आप फिल्टर ज़्यादा हो जाता है कि आपको इंफॉर्मेशन ज़्यादा प्रिसाइज चाहिए, ठीक है। और जो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है रिकॉल और प्रिसीजन के बीच में, वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इन दोनों का जो ग्राफ होता है वो अगर बात करें तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो ग्राफ होता है, that is what is the graph of graph between recall and precision. तो ये तो डिस्कशन हो गया इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, उसका बेसिक इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, एंड देन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के डिफरेंट कंपोनेंट्स, नीड ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स, देन इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। इन सभी से क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना। अगला है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, और इस प्रोसेस में नेक्स्ट वन इज अबाउट द सर्च। आप इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में सर्च कैसे परफॉर्म करते हो? तो अब दो तरीके का सर्च हो सकता है, एक होता है ऑफलाइन, दूसरा होता है ऑनलाइन। ऑफलाइन सर्च के लिए मोस्टली आप लाइब्रेरी में जब सर्च करने जाते हो तो कहाँ से सर्च करते हो? यू विल गो टू द कैटलॉग कार्ड। हालांकि आई डोंट नो, मेनी ऑफ यू मे नॉट बी इवन अवेयर कि क्योंकि ज़्यादातर लाइब्रेरी से अभी कैटलॉग कार्ड्स को वीड आउट कर दिया गया है, कई सारे जगह पे है भी, बट दैट इज नॉट क्वाइट फंक्शनिंग। तो कैटलॉग पहले क्या होता था, लाइब्रेरीज में आप जाते थे, आप कैटलॉग कार्ड से अपनी क्वेरीज को देखते थे, सर्च करते थे, एंड यू यूज्ड टू गेट द you were from the catalog card you were directed to the सेल्फ्स, और वहाँ सेल्फ से आपको आपका रिसोर्स मिल जाता था, ठीक है। यही सिमिलर चीज होता है इंडेक्स से भी। इंडेक्स का भी यही पर्पज है, सब्जेक्ट इंडेक्स या कीवर्ड इंडेक्स में भी ऐसे ही होता है। आप कीवर्ड्स के थ्रू जाते हो, आपको लोकेशन पता होती है, उस पर्टिकुलर रिसोर्स पे जाते हो और वहाँ सर्च परफॉर्म करते हो। एक जो एक बेसिक डिफरेंस है इंडेक्स और कैटलॉग के बीच में, वो ये है कि कैटलॉग थोड़ा ब्रॉडर होता है। ब्रॉडर इन द सेंस, कैटलॉगिंग का पर्पस होता है वो रिसोर्सेज को सर्च करने के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर बुक्स सर्च करने के लिए या कोई अदर रिसोर्सेज। लेकिन जो इंडेक्स होता है वो दैट्स नॉट लिमिटेड टू स्पेसिफिक रिसोर्स। वो रिसोर्स के साथ साथ आपको अलाउ करता है कॉन्सेप्ट्स को भी सर्च करने के लिए। एक बहुत अच्छा एग्जांपल उसका बैकअप द बुक इंडेक्स है, जिसको आप लोग किसी भी बुक में, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें देखेंगे तो पीछे किताब के पीछे इंडेक्स बना होता है, अल्फाबेटिकली होता है मोस्टली, और उस अल्फाबेटिकल इंडेक्स में आप
कोई कॉन्सेप्ट को सर्च करते हो और वो सर्च जो है रेस्पेक्टिवली इट गाइड्स यू टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पेज, और वहां जाके आप कॉन्सेप्ट को रिट्रीव करते हो या उस कॉन्सेप्ट के बारे में जान पाते हो। तो ये तो हो गया ऑफलाइन सर्चिंग। दूसरा होता है ऑनलाइन सर्चिंग। तो ऑनलाइन सर्चिंग जो होती है वो उसका सिंपल सा एग्जांपल है, आप अपने ब्राउजर पे सर्च करते हो, सर्च इंजन्स आर देयर व्हिच आर इंटीग्रेटेड बाय डिफॉल्ट फ्रॉम द ब्राउजर्स। तो ब्राउजर क्या करता है, सर्च इंजन को भेजता है, सर्च इंजन क्या करता है, स्पाइडर्स को भेजता है वर्ल्ड वाइड वेब पे, और इंडेक्स होता है और क्वेरी आती है और वो आपके पास तक पहुंचता है। तो ये मैकेनिज्म है ऑनलाइन सर्च का। तो अब लेट्स डिस्कस अबाउट different kind of techniques in information search, which we have already discussed in the class in detail, but I will give just an overview. तो कीवर्ड सर्च सबसे पहले तरीके का सर्च होता है जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हो कि कौन से कीवर्ड्स हैं जो रिलेटेड है आपके टॉपिक से, और उन कीवर्ड्स को आप सर्च करते हो। मोस्टली ये जो कीवर्ड सर्च होते हैं वो ब्रॉड होते हैं नेचर में, और आप कई बार डिफरेंट ऑपरेटर्स का यूज करते हो इनके साथ, जैसे बूलियन ऑपरेटर्स का यूज करते हो एंड और या फिर दूसरे फ्रेज सर्च का यूज करते हो कीवर्ड्स के लिए। दूसरे तरीके का सर्च है सब्जेक्ट सर्च। कभी भी आप किसी बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस पे जाइएगा, जैसे कि वेब ऑफ साइंस या स्कोपस या लीसा, किसी पर भी जाएगा तो वो सर्च सब्जेक्ट सर्च का ऑप्शन भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आप वहाँ पे ना फिल्टर कर देते हो तो उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कीवर्ड सर्च होते हैं, ठीक है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ सब्जेक्ट सर्च। देन फ्रेज सर्च इज अनदर एग्जांपल, जिसमें कि दो या दो से अधिक वर्ड अगर एक साथ हैं जिनको सर्च करना है तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करके इसको सर्च को परफॉर्म कर सकते हो, इससे प्रिसाइज रिजल्ट मिलेगा आपको। देन सारे कुछ डिफरेंट तरीके के सर्च टेक्निक्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है बूलियन सर्च। बूलियन सर्च स्टार्ट करा था जॉर्ज बूल ने, जिसमें 3 बेसिक टेक्निक्स हैं, एंड है और नॉट है। एंड जो है वो एंड क्या करता है, वो जब कोई भी सपोज देयर आर 2 कीवर्ड्स लाइक इंफॉर्मेशन एंड रिट्रीवल, तो अगर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज द कीवर्ड एंड इट इज एडेड लाइक इंफॉर्मेशन एंड रिट्रीवल, सो दैट मीन्स क्या होगा कि इंफॉर्मेशन और रिट्रीवल जहाँ पे एक साथ होगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो सर्च करके ले आके आपको प्रेजेंट करेगा सिस्टम पे। और होता है एटलीस्ट वन, तो अगर इंफॉर्मेशन और रिट्रीवल यू हैव गिवन द कीवर्ड, तो जिस भी जगह पे जिस भी डॉक्यूमेंट में उसे इंफॉर्मेशन या रिट्रीवल मिलेगा उन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके आएगा। तो एंड जो है वो आपको बेहतर और मींस प्रिसाइज रिजल्ट देगा और आपको हाई रिकॉल देगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप समझो कि एंड इज अ गुड एग्जांपल when you want high precision, whereas or is a good example when you want high recall. तीसरे तरीके का जो ऑपरेटर है वो है नॉट यूज होता है, नॉट इस तरह से यूज होता है कि जैसे इंफॉर्मेशन नॉट रिट्रीवल, सो दैट मीन्स ये क्या करेगा, वो सारी जगह से इंफॉर्मेशन को लेके आएगा जहाँ पे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के साथ नहीं है, ठीक है, इंफॉर्मेशन बट नॉट रिट्रीवल। तो दिस इज आल्सो यूज्ड फॉर प्रिसीजन पर्पस, ठीक है। तो जब आप रिकॉल एंड प्रिसीजन का एग्जांपल दे रहे होंगे, जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज रिकॉल प्रिसीजन, तो उसमें आप ये एग्जांपल भी दे सकते हो कि एंड नॉट, these two operators are used for high precision, whereas or can be used for recall, ठीक है। और इन जनरल जो अपने सर्च इंजन सर्च करते हैं वो और के ही बेसिस पे करते हैं, और ऑपरेटर के ही बेसिस पे करते हैं। तो वो जैसे आप इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्च करोगे गूगल पे बिना कोई फिल्टर दिए या बिना कोई
टेक्निक यूज करें तो जहां जहां इंफॉर्मेशन होगा उसको भी ले आके देगा, जहां जहां इंफॉर्मेशन रिट्रीवल होगा वो भी देगा, और जहां वहां रिट्रीवल होगा वो भी देगा। ठीक है, अगला है एग्जैक्ट फ्रेज। एग्जैक्ट फ्रेज क्या होता है? अगर आपको सपोज कि कोई भी समझ लो कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, सपोज दिस इज अ फ्रेज और इससे आपको रिजल्ट ले आना है, और जहां लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है पूरी तरीके से दिया गया है वही रिजल्ट चाहिए, तो आपको एग्जैक्ट फ्रेज सर्च करना होता है, जिसमें आपको इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में कीवर्ड देना होगा। तो रिजल्ट क्या होगा? जहां पे वो सारा का सारा एक साथ मिलेगा उसी ऑर्डर में, वो फ्रेज आपको सर्च करके लेगा सिस्टम। अगला जो सर्च करने का टेक्निक है वो है ट्रंकेशन। ट्रंकेशन को स्टेमिंग भी बोलते हैं, और ये क्या करता है? ये सर्च को ब्रॉड करता है थोड़ा सा। जैसे मान लो अगर आपको आप स्पेलिंग मिस हो गया, या आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या सर्च करना है, बट अ फ्यू वर्ड्स और फ्यू कैरेक्टर्स यू नो, लाइक अगर आपको सर्च करना है लाइब्रेरी, लाइब्रेरियन, लाइब्रेरीज, ये सारी चीजें सर्च करनी है, और आपने लिब्रा, LIBRA करने के बाद मोस्टली जो ट्रंकेशन के लिए जो ऑपरेटर यूज किया जाता है वो है एस्ट्रिक्स स्टार। तो आप स्टार यूज करके क्या कर सकते हो? लिब्रा लिख के स्टार लिखा, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे लिब्रा होगा, लाइब्रेरी होगा, लाइब्रेरियन होगा, लाइब्रेरीज होगा, ये सारे इंफॉर्मेशन को वो फेच करके ले आएगा। तो जो ट्रंकेशन होता है वो 3 तरीके का होता है। लेफ्ट ट्रंकेशन, जिसमें अगर लेफ्ट साइड आपने कोई चीज भूले हो आप, और राइट के कुछ वर्ड्स याद हैं, तो उसके लिए लेफ्ट ट्रंकेशन यूज किया जाता है। मिडिल ट्रंकेशन मींस अगर बीच में कोई वर्ड आप भूल गए हो तो उसके लिए मिडिल होता है। और राइट ट्रंकेशन जो होता है वो राइट में, राइट के टर्म्स अगर आप भूले हो तो यूज होता है। अगला सर्च का टेक्निक है वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड एक्चुअली अलाउ करता है आपको लेटर और कैरेक्टर के बीच में कोई भी एक वर्ड, एक कैरेक्टर अगर आपका मिस हो रहा है बीच में, तो उसको सर्च करने के लिए यूज किया जा सकता है। कई बार जैसे कि आपने कोई वर्ड लीजिए जिसपे कि पूरा स्पेलिंग आपको पहले का और बाद का आपको पता है, लेकिन बीच का आपको कुछ नहीं पता है, तो देयर यू कैन यूज द क्वेश्चन मार्क साइन, एंड दैट इज कॉल्ड एज वाइल्ड कार्ड। अगला है प्रॉक्सिमिटी सर्च। प्रॉक्सिमिटी एक्चुअली का मतलब होता है, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियर, कि किसी वर्ड के कितना नजदीक, how near you have to get, how near you want to get the results। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो लाइब्रेरी और सेंटर, ये 2 वर्ड है आपके पास, और बीच में एन नियर का 3 वर्ड का आपने एग्जांपल वो दे दिया आपको, आपने कंस्ट्रेंट दे दिया, तो वो लाइब्रेरी और सेंटर के बीच में 3 वर्ड, वो 3 या 3 से कम वर्ड को अपने आप से इंसर्ट करेगा, और वो सारे के सारे रिजल्ट्स आपको प्रेजेंट करेगा। ठीक है, देन विद इन इज अनदर, इसी में एक और प्रॉक्सिमिटी सर्च का एक मैंने बताया नियर, और दूसरा है विद इन। विद इन होता है अगर आपने 2 पर्टिकुलर कीवर्ड्स आपके पास है, और बीच के कीवर्ड आपको देने हैं, डिफाइन करके देना है कि विद इन हाउ मेनी कीवर्ड्स द रिजल्ट शुड बी। तो W3 आपको W से देना होगा, और नंबर कितने वर्ड्स उसके बीच में आ सकते हैं वो देना है। जैसे सचिन तेंदुलकर you have given, and you have given W3, तो ये जो वर्ड होगा, जो पूरा का पूरा वर्ड बनना है, वो विद इन 3 वर्ड्स बनना है। तो आप जो सर्च करेगा क्वेरी, वो सचिन रमेश तेंदुलकर सर्च करके ले आके आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, इसके अलावा जब सर्च परफॉर्म करते हो आप, तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड स्पेसिफिक सर्च। आप सर्च करना किसी भी बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस में, लिस्टा में या फिर स्कोपस में, तो वहाँ फील्ड स्पेसिफिक सर्च के ऑप्शंस होते हैं। इसमें आप ऑथर की बेसिस पे सर्च कर सकते हो, सब्जेक्ट की बेसिस पे सर्च कर सकते हो, टाइटल की बेसिस पे सर्च कर सकते हो, फॉर्मेट टाइप पे सर्च कर सकते हो, डिफरेंट पब्लिकेशन डेट्स कैन बी सर्च्ड, लैंग्वेज बेस्ड ऑन लैंग्वेज इट कैन बी सर्च्ड।
इसके अलावा सर्च कैन बी लिमिटेड आल्सो बेस्ड ऑन डेटा लाइक if you any of you have searched in Scopus, you can see you can limit the search based on date, based on the full text, or based on the publication journals, based on different publication types, or based on the keywords and titles. Then whether a particular date or a particular range, all these based on all these criteria also you can perform the search. इसके अलावा आप एक और एल्गोरिदम्स के बारे में हम थोड़ा सा बात कर रहे थे, सर्च एल्गोरिदम्स के बारे में, जिसमें I had already mentioned about the TF and IDM ranking algorithms. तो ये एक पॉपुलर एल्गोरिदम है जिसको कि सर्च में सर्च परफॉर्म करने के लिए यूज करा जाता है, ठीक है, सिस्टम्स के द्वारा, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स के द्वारा. तो अभी जो हमने डिस्कस करा पोस्ट इंफॉर्मेशन retrieval system, what we discussed about the search or strategic search rather. तो इसमें क्या होगा, आप सर्च को ना टेलरिंग करते हो. इसके लिए जो जब हम सर्च स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, तो इसको अगर कोई बोले कि हाउ विल यू डिफाइन सर्च स्ट्रेटजी, सो सर्च स्ट्रेटजी कैन बी डिफाइंड एज टेलरिंग द सर्च, लाइक एज पर योर नीड यू आर मेकिंग सम you are tweaking the keywords or the approaches to search and getting the optimum results. तो इसमें हमने क्या बात करी, दो मेजर तरीके के सर्चेस परफॉर्म करे जाते हैं. एक तो हो गया ऑफलाइन, जो कि लाइब्रेरी में होता है, जो आप इंडेक्स से या फिर कैटलॉग का यूज करते हो, और दूसरे हैं ऑनलाइन सर्च, जिसको आप यूज करते हो डिफरेंट टेक्निक्स लाइक कीवर्ड सर्च, सब्जेक्ट सर्च, फ्रेज सर्च, बूलियन सर्च, देन truncation, wildcard, proximity search. These are the different search techniques. You can limit the search also. So these are the so there might be some questions that what are the different search strategies, what is proximity search, or what is Boolean search. Write a note on Boolean search, or what do you understand with search strategies. So these are the questions, or these are the type of questions which may be asked in the examinations. So isko aap log and I think it is properly given in SLM as well. अब इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं. इस पे भी कभी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस. तो सबसे पहले क्या करते हो आप, सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए इनिशियल स्टेज होता है, यू हैव टू फैमिलराइज, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि वो टॉपिक, वो पर्टिकुलर टॉपिक जो आप सर्च कर रहे हो, उससे कौन कौन से कीवर्ड निकलेंगे, वो कौन कौन से कीवर्ड से रिलेटेड है, ठीक है. तो इट्स अ काइंड ऑफ फैमिलराइजेशन, और दिस इज द इनिशियल प्रोसेस. देन व्हाट यू डू, you explore the area a bit कि हाँ भाई रिलेटेड सर्च क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, रिलेटेड कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, सो दैट यू कैन ऑप्टिमली यूज दी सर्च स्ट्रेटजीज. कौन कौन सी सर्च स्ट्रेटजीज यूज करनी है वो सब आप समझते हो. आगे क्या करते हो, आप क्वेरी फॉर्मुलेट करते हो. क्वेरी फॉर्मुलेट करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो मैंने बताई, इसमें सब्जेक्ट बेस्ड हो सकता है, कीवर्ड बेस्ड हो सकता है, फ्रेज बेस्ड हो सकता है, कंडीशन हो सकता है, ये सब आप करते हो. एंड देन you put this particular information to the GUI in terms of online search, जिसमें कि आप किसी ब्राउजर में ये सारे सर्च परफॉर्म करते हो and you get the result. अब कई बार मैंने देखा है कि क्वेश्चंस आते हैं कि what are the different advantages or disadvantages of online and offline searches. तो अब ऑनलाइन सर्च का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है टाइम सेविंग होता है ये, क्योंकि आपका एक्सेस जो होता है वो डायरेक्ट होता है, सीधे आप जाते हो, आपको किसी थर्ड पार्टी से नहीं मिलना है, यू कैन डायरेक्टली गो एंड सर्च फॉर द रिसोर्स. देन इजी टू एक्सेस, ये काफ़ी आसान होता है, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो. देन द इंफॉर्मेशन विल बी करेंट. ऑफलाइन सर्च में क्या होता है, जो लाइब्रेरीज के जो इंफॉर्मेशन होते हैं, कई सारे इंफॉर्मेशन मे चेंज आफ्टर सम टाइम्स, ठीक है.
लेकिन ऑनलाइन सर्च में आप रेगुलरली अपडेट कर सकते हो। ऑफलाइन सर्च में you know कि there are limitations, you have to print it, keep it, process it, and then it comes to the library, and by then so many information gets outdated. Other way around, when we talk about online, it is relatively current, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन होता है इमीडिएटली आपने चेंजेस करे और वो पब्लिश हो गए। then different kind of format it's supported in online search. then geographical barriers हट जाते हैं इससे, ऑनलाइन सर्च से। आप यहाँ से सर्च कर रहे हो या फिर लाइक फॉर एग्जांपल ऑनलाइन क्लासेस जो अभी अभी ली जा रही हैं आपकी, आप इजीली more than 50 people could attend the class, but when it comes to offline class, many of you may not be able to come due to geographical barrier. Some of you might not be from Delhi. then मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स होते हैं, एक ही साथ कई सारे लोग सर्च कर सकते हो। इसका उल्टा लाइब्रेरी में होता है, आपके पास मान लीजिए कैटलॉग, एक ही कैटलॉग कार्ड है, तो आप एक ही पर्सन एक बार में सर्च कर सकता है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं ऑनलाइन सर्च के, जैसे कि प्राइमरी कॉस्ट विल बी लिटिल हायर, आपको शुरुआत में कुछ इन्वेस्टमेंट करने होते हैं। डिजिटल डिवाइड इज अनदर फैक्ट, जिसमें कि कि each and everyone doesn't have the equal opportunity to get the resources or to access the resources. Probably some of the institutions where more funding is there, they might be having the access of Scopus and Web of Science search engines or associated search bibliographic databases. So they can search, but what about others? They may not be able to search. Lack of training, sometimes we go for searching randomly, we don't go different tools और टेक्निक्स के बारे में अवेयर नहीं होते हैं। कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, जो कि अनदर यू कैन से चैलेंज टू do the online search, to implement the online search. There are different online search services which quite often not necessarily asked in your term exams, but in different competitive exams questions are asked, like what are the different online search services: Lisa, Lista, Eric, WorldCat, PubMed, JSTOR, Oyster, EBSCO. So these are some of the online search services which are powered by various commercial and open access vendors. So then let us now discuss about the search engines. तो सर्च इंजन्स क्या होते हैं? आप सभी ने आज तक सर्च इंजन्स पे बहुत सारे सर्चेस परफॉर्म करे होंगे, बट वो हाउ डू दे वर्क? Let us discuss a bit about that. Okay. So before that, how to define search engines? So search engines are the tools which are used to search information on internet. So this is the very basic definition of search engine. So they are the tools which are used to search the information on internet. Now there are different softwares or different search engines already used, there in the picture, like Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo. You may be knowing about Baidu, you may be knowing about Naver, Wolfram Alpha, and many more. So these are some of the examples. Mostly they get the data or they get the information through specific indexes or in specific repositories available on the World Wide Web, and of course you can use the different search techniques or different search approaches, which I have already discussed in search engines, different search engines. So process, how search engine works actually. So सबसे पहली चीज कुछ बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। एक तो ये है कि ये HTTP प्रोटोकॉल के बेसिस पे काम करता है। HTTP प्रोटोकॉल होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पे इंफॉर्मेशन को ट्रैवर्स करने के लिए या इंफॉर्मेशन तक जाने के लिए उस प्रोटोकॉल का यूज होता है। तो
that is one. Another one is crawlers. तो crawlers या crawlers क्या होते हैं, इनको spiders भी बोला जाता है। तो वो क्या करते हैं, जब आप कोई सर्च परफॉर्म करते हो तो crawlers will crawl through the world wide web और सारे रिसोर्सेज से वो इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और ले आके इंडेक्स बनाने तक का काम करते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं वेब क्रॉलिंग। तो सबसे पहले these are the two major components which you should be knowing, two major concepts. Like one is protocol, the protocol which is used for the web searches, that is HTTP protocol, and then search engines use crawlers or spiders to search the information. ठीक है, अब इनका वर्किंग कैसे होता है? तो फर्स्ट स्टेप होता है यूजर क्वेरी इनपुट। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, you put the first of all what you do is you put the user query, ठीक है, you input the query। वो कैसे करते हो? आप किसी भी वेब ब्राउजर में, जैसे गूगल के लिए डिफॉल्ट ब्राउजर है क्रोम, उसी तरीके से बिंग के लिए आप एज का यूज करते हो। तो ब्राउजर में आपने जाके सर्च परफॉर्म करा, दैट इज यूजर क्वेरी इनपुट। सेकेंड वन इज क्वेरी प्रोसेसिंग। अब क्या होगा, जो ब्राउजर है, डिफॉल्ट ब्राउजर, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम और द अदर वन दैट्स एज, वो क्या करेंगे, क्वेरी को प्रोसेस करेंगे, ठीक है, और उस प्रोसेस होने के बाद देन इट विल गो टू द सर्च इंजन and then web crawling will happen. So crawlers crawl through the web gathering the information from various web pages, different web pages पे जाएंगे और आपकी जो सर्च होंगे, डिफरेंट तरीके के जो आपकी क्वेरीज होंगी, डिफरेंट सर्च स्ट्रेटजीज जो आपने फॉलो करा है, उसके बेसिस पे वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा crawler. Then the indexing will be performed. So whatever data is being collected by the crawler, that will be indexed, created in a structured database, and different terms or associated key terms, whatever are there, they will be made as an index, ठीक है। और उनका एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस बनेगा जिसमें कौन सा कीवर्ड कहाँ से आया हुआ है और कितने कीवर्ड्स हैं, कहाँ से, इन द सेंस विच फ्रॉम विच वेब पेज दे हैव बीन टेकन, और उनका एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस तैयार किया जाता है। देन द नेक्स्ट स्टेज इज उन सारी वेब पेजेस की रैंकिंग करी जाती है यूजिंग डिफरेंट पेज रैंकिंग एल्गोरिथम्स। देन सर्च रिजल्ट जो है वो आपको प्रेजेंट किया जाता है आपके सिस्टम पे। यूजर इंटरेक्शन होता है, आप एज ए स्निपेट जब कोई भी इंफॉर्मेशन आपके सामने आता है, आप रिव्यू करते हो और क्लिक करते हो, एंड व्हेन यू click on the links you get the web page retrieved, okay। और फिर आपको अगर कुछ फीडबैक या ऐसे देने होते हैं तो you can perform further एक्शंस। तो ये है सर्च इंजन्स की फंक्शन। कई बार ये शॉर्ट नोट आया हुआ है सर्च इंजन के बारे में, सो दिस whatever I have discussed, this will be sufficient for short note terms, or even if it is long note, you have to discuss about the working of the search engines as well. अगला है मेटा सर्च इंजन। तो मेटा सर्च इंजन क्या होते हैं? वो होते हैं एग्रीगेटर्स एक तरीके से। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जो मेटा सर्च इंजन का एग्जांपल है, वो है स्काई स्कैनर। स्काई स्कैनर जिनने भी फ्लाइट्स वगैरह के लिए सर्च करा होगा उन्होंने देखा होगा कि अब आप डिफरेंट या तो आप क्या करो कि गोइबिबो पर भी जाओ, IRCTC पर भी जाओ, फिर यात्रा.com पर भी जाओ, हैप्पी इजी गो पर भी जाओ, इजी गो पर भी जाओ, मेक माई ट्रिप पर भी जाओ। इन सारे के पास आपको जाना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, और आप अकॉर्डिंगली आपको अपना ट्रैवल प्लान करना पड़ेगा। बट व्हाट स्काई स्कैनर डज इज, ये सारे इंफॉर्मेशन को वो एग्रीगेट करता है और वो आपके सामने रिजल्ट को प्रेजेंट कर देता है। तो आपके लिए बेहतर हो जाता है
ये जान पाना कि कौन सी फ्लाइट आपके लिए चीपर है, कौन सी फ्लाइट में आपको कम समय लग रहा है जाने के लिए। तो दिस इज द पर्पस ऑफ मेटा सर्च इंजन। मेटा सर्च इंजन क्या करता है, वो मल्टीपल इंडिविजुअल सर्च इंजन से क्या करता है, इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट करता है और प्रेजेंट करता है एक यूनिफाइड इंटरफेस में अपने सामने, ठीक है। सो if someone asks what is the definition could be, this is also a search engine. Meta search engine is also a search engine, but what it does is it aggregates the results from multiple individual search engines and presents them in a unified interface, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंस्टीड ऑफ क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग वेब इंडिपेंडेंटली, मेटा सर्च इंजन क्या करता है, सारी क्वेरीज को सेवरल अदर सर्च इंजन्स के पास भेज देता है और जो रिजल्ट्स आता है उसे वो कंबाइन करके एक सिंगल लिस्ट में आपके सामने दे देता है। तो ये इससे कन्वीनियंट हो जाता है यूजर को, क्योंकि मल्टीपल सर्च इंजन्स के जो रिजल्ट हैं वो एक सर्च इंजन पे आ जाता है। तो दैट सर्च इंजन इज कॉल्ड एज मेटा सर्च इंजन. There are some examples of meta search engine, like Dogpile is there, Kayak is there, MetaGen is there, Skyscanner is there, Zoo, Mama, Yippee, Webcrawler, Cartpo, and there are many such. So these search engines, all of these search engines, yeah, as a user, you must be aware about this meta search engine also. It actually reduces the time and effort. Instead of compiling from multiple sources, the results you get at one place itself. Okay, combined results. And the examples which I told about the meta search engines, these are quite often asked in different competitive exams and net exams. So they are those also must be read by you. Now we have 10 minutes. So if you have any question or any other comments, you can just discuss. We can discuss this time. So remaining whatever is remaining in the course, what we will we will discuss in the next class, mostly about the indexing and bibliographic description part. So these two parts, along with maybe advanced search and retrieval, we will discuss in the next session. So till now, so about today's class, if you have any query or question, you can ask. Can you please comment about coordinate and post-coordinate indexing? Although this I discussed in the previous class itself. So and we will be discussing in next revision class about indexing in detail. But as of now, post coordinate and pre coordinate indexing are two major types of indexing where it is defined that when the index is being prepared. So in pre-coordinate indexing, what user does, or sorry, what indexer does, they make the index and think about what could be the choice of the user, or how they will ask the queries, or how will they go for the searching. So they map with the knowledge they are having, and the question will be used by the people in future. So based on that, they prepare a index. So such kind of indexes are called as pre-coordinate indexing. So example of pre-coordinate indexing are your keyword indexes are the example of pre-coordinate indexing. Chain indexing is the example of pre-coordinate indexing. Then Preci and Popsy is the example of pre-coordinate indexing. Then systematic indexing by Cassar, that is also example of pre-coordinate indexing. The post-coordinate indexing, what happens? It is the keywords based on the search index is being performed.
in post coordinate indexing at the indexing, not at the indexing stage, at the search stage. There are two stages. One first stage is indexing stage, another stage is search stage. So post coordinate indexing, the search is performed at the no, indexing is performed at the made at the search stage, whereas in pre-coordinate indexing, the index is being made beforehand itself. Okay, this is anticipatory. So this is the basic difference. We will discuss about this in next class also, because indexing we are going to revise in next class. Other questions? Yes, sir. So Another one is interoperability. इंटरऑपरेबिलिटी, यस. सो इंटरऑपरेबिलिटी Yes, का मतलब होता है, एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ आपको. मान लो आपको दोस्ती करनी है, ठीक है, किसी के साथ दोस्ती करनी है, तो आपको एक कॉमन स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है, एक दोनों के बीच में एक ग्राउंड स्टैब्लिश करना पड़ता है, जिससे कि आप किसी से दोस्त बन सको. तो क्या होगा, क्योंकि आप दो इंडिविजुअल हो, आप हो और आपका दोस्त है, यू आर ए एंड योर फ्रेंड इज बी. सो आप दोनों के बीच में, बिटवीन ए एंड बी, अगर आप दोनों के बीच में कॉमन ग्राउंड्स नहीं होंगे, कॉमन स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे, तो आप दोनों में दोस्ती नहीं हो पाएगी, या आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे. यही चीज होता है सिस्टम में. सिस्टम में इंटरऑपरेबिलिटी क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में. मान लो अगर कोई एक सिस्टम है जो एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम पे काम कर रहा है, जो कि ए है, और दूसरा है जो काम कर रहा है बी एल्गोरिदम पे, तो उन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है. तो इंटरऑपरेबिलिटी जो है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, शेयरिंग है, ठीक है, वो नहीं हो पाएगा. ओके, सो एक तरह से इंटरऑपरेबिलिटी इज अ मैकेनिज्म और means to communicate between communicate between one system to another system. ठीक है, ये एक मैकेनिज्म है इंटरऑपरेबिलिटी. thank you. Yes. Other questions? So let me just briefly tell you what kind of questions have been asked from the part which we have discussed today. I have already briefed during the class, but once again, since I have list of few questions which was shared by one of the students, so I will just narrate it to all of you, so that you just know. So the questions which were asked previously are like, define the concept of information retrieval and इंफॉर्मेशन ब्राउजिंग. सो एक और बात यहाँ पे ब्राउजिंग की बता देता हूँ. सर्च और ब्राउज दो चीजें होती हैं, ठीक है. सर्च इज स्पेसिफिक, ब्राउज इज नॉट स्पेसिफिक. जब आप गूगल पे जाते हो और आपके दिमाग में कोई कीवर्ड आया और आपने सिंपली उसको पुट कर दिया, तो दैट इज नॉट सर्च अनलेस यू स्ट्रेटेजाइज इट. जब तक कि कोई कुछ खास स्ट्रेटजी या कोई टेक्निक आपने सर्च की नहीं यूज करी है, तब तक वो ब्राउज है. तो इंफॉर्मेशन ब्राउजिंग क्या होता है, बेसिकली आप इस एग्जांपल से समझो. जब सेल्फ में जाते हो आप, सेल्फ में सिंपली बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं,
तो आप 1 2 3 सारी बुक्स देखते चले जाते हो, दैट इज जस्ट नथिंग बट अ ब्राउजिंग। लेकिन जब आप सेल में जाने के पहले ओपैक से आपने कीवर्ड डाल के सर्च करा और अब आपको स्पेसिफिकली पता है कि हाँ ये है रिसोर्सेज, और आप सीधे वहीं गए और उन रिसोर्सेज को आपने देखा और रिट्रीव करा, तो ये हो गया सर्च। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सर्च एंड ब्राउज। Then the question is explain the various components of information storage and retrieval system. तो ये हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया है आज के क्लास में। Now we also have the questions like discuss various landmarks in indexing system. तो ये एक तो हमने पार्शियली हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया है इसके इवोल्यूशन के बारे में, जिसमें लाइब्रेरी कैटलॉग्स, इंडेक्सेस, पंच कार्ड, सर्च एल्गोरिथम्स, बूलियन, ये इनके बारे में थोड़ा हमने डिस्कस करा है, और इन डिटेल में हम थोड़ा सा और अगली बार डिस्कस करेंगे। बट आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ कि डिफरेंट इंडेक्सिंग सिस्टम्स आए अलग अलग टाइम पे। कटर ने सबसे पहला इंडेक्सिंग सिस्टम ले आए, कटर CA cutter, and then the systematic indexing system came by Kaiser. Then Faraday came with relational indexing. Ranganathan's chain indexing came in between. Then Pressy of Derek Austin came in between. Then Popsy of Ganesh Bhattacharya came. Then computerized indexing also came. So these are the different indexing systems. So these are the different landmarks in indexing systems which you can elaborate when such kind of questions are asked. Then some other, let me see if I have other questions. Yes. Then another question has come, what do you mean by information retrieval? Discuss with the suitable example and various types of search techniques. So this also we have covered today. हमने बात करी है कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या होता है। सुइटेबल एग्जांपल्स के लिए मैंने जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम का जो एग्जांपल दिया मैंने, सर्च इंजन्स हो गए, चाहे वो ओपैक या कैटलॉग हो गए या फिर बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस हो गए, इनके बारे में भी देख सकते हो। फिर डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो है वो ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट it's something where entire library and information science में जो आप थ्योरीज पढ़ते हो वो अप्लाई करते हो इंफॉर्मेशन मैनेज करने के लिए। और रिट्रीवल इज वन एस्पेक्ट। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इज द पर्पस ऑफ इंटायर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और लाइब्रेरी मैनेजमेंट इटसेल्फ। जैसे कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। वो हो सकता है इंफॉर्मेशन एक्विजिशन, इंफॉर्मेशन organization, information retrieval, information dissemination, information preservation, all that can be the part of information management, and information retrieval itself can be a part of information management, ठीक है। फिर पूछा है, क्वेश्चन है कि डिस्कस द फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम। मैंने दो मेजर फंक्शन बताया आपको, एक करंट अवेयरनेस सर्विस और दूसरा बताया रेट्रोस्पेक्टिव सर्च। और डिफरेंट टाइप ऑफ सर्च और रिट्रीवल सिस्टम जो मैंने बताया वो ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन डेटा, ऑडियो इंफॉर्मेशन storage and retrieval system, multimedia, then text, then other kind of information retrieval system. Explain the need and for evolution of information retrieval system. Examine by giving example. Criteria which will be used for evaluation. मैंने इसकी भी बात करी है आज कि क्या है evaluation के different criteria information retrieval system के, ठीक है। तो इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में। SLM ध्यान दीजिए, पहला यूनिट ध्यान से पढ़िएगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू रीड थ्रू, यू गो थ्रू। और कोई क्वेश्चन है तो हम जब हमारा अगला सेशन होगा, दैट इज प्रोबेबली 7th और 8th, उस टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे इनके बारे में, ठीक है। सो विद दिस
we will close today's session, and we will discuss the remaining part of this particular paper on the next class. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, please, all of you, please leave.